alpha helix. लिखना, just a line about alpha helix. In this structure, the polypeptide chain is folded due to hydrogen bond, forming a helix-like structure. ये अब आपको पता है ना कि प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज. तो दैट वाज पेप्टाइड लिंकेज. मैंने आपको बताया था सी डबल बॉन्ड ओ NH. अब देखो, एक पेप्टाइड लिंकेज का सी डबल बॉन्ड ओ और अगले वाली का NH, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड. उसी तरीके से आगे जाके एक पेप्टाइड लिंकेज का NH का हाइड्रोजन और अगली वाली का ऑक्सीजन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, and as a result this end and this end will start folding, which will generate an alpha helix. A helical like structure will be generated. Am I clear here? देखो, there is a long polypeptide chain है ना. ये इस long polypeptide chain में C डबल बॉन्ड O और उसके आगे NH, उसी तरीके से आगे जाके C डबल बॉन्ड O NH. अब होगा क्या, ये वाला H और ये वाला ऑक्सीजन आपस में अरेंज होता है 3 डायमेंशन में, कैन गेट अट्रैक्टेड. So because of that this chain will start folding and that will generate a helical like structure. Am I clear? बस इतना सा पता होना चाहिए. जितना मैं करवा रहा हूं that is more than sufficient. सबसे पहले, what is the significance of the secondary structure? It gives us the manner in which the polypeptide chain is either folded or arranged. What are the two ways in which the polypeptide chain can be arranged? It is either helical like structure or beta plated. अब लिखना second, beta plated. Beta plated structure, all peptide chains are stretched, all polypeptide chains are stretched and lie side by side in a zigzag manner. All polypeptide chains are stretched and lie side by side in a zigzag manner to form a flat sheet-like structure. To form a flat sheet-like structure. Right? That's why we call it as beta plated structure. Then we come to the third, tertiary structure. Beta plated नहीं. So pleated means layer like. तो आपकी जो polypeptide chains है, they will lie side by side to each other and that will give it a layered structure. We call it as beta plated. Then we come to the tertiary structure. Tertiary structure of proteins. It refers to the overall folding and bending of the polypeptide chain in 3 dimensions. It tells us the overall folding and bending of the polypeptide chain in 3 dimensions. That is, it gives the overall shape of the protein.
It gives us the overall shape of the protein. तो आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसकी क्या ओवरऑल शेप होगी, whether it will be fibrous or what are the two shapes of the proteins, fibrous and globular. अगर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे फोल्ड होनी स्टार्ट होगी तो ये बन जाएगा ग्लोबुलर, और अगर वो रहेगी बीटा प्लेटेड देन इट विल रिजल्ट इनटू अ फाइब्रस. तो 3 डायमेंशन में आपको अपना प्रोटीन कैसा नजर आता है, फाइब्रस या ग्लोबुलर, कौन बताएगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी बताएगा सीक्वेंस, दैट्स द वर्ड. Primary tells us the sequence, secondary tells us how the polypeptide chains are arranged, whether they have started to fold or they are lying in a sheet like structure. Third बताएगा overall आपको प्रोटीन कैसा नजर आता है. Then we come to the quaternary structure. Quaternary structure of the proteins. It tells us the number of polypeptide chains present in a protein molecule. Number of polypeptide chains present in a protein molecule. Number of polypeptide chains present in a protein molecule. और पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं सब यूनिट्स. Number of polypeptide chains which are present in a protein molecule, that is called as. डन है ये? मैं बताऊं सिंगल लाइन की चीजें हैं ये. प्राइमरी, सीक्वेंस, सेकेंडरी, हाउ द चेन्स आर अरेंज्ड और फोल्डेड. थर्ड द ओवरऑल शेप. फोर्थ इज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इतना करना है बस. नेक्स्ट लिखो, forces that stabilize a protein. Forces that stabilize protein structure. Forces that stabilize the protein structure. First one is hydrogen bond. Second is ionic bonding. Third is the van der Waals forces, and fourth is disulfide linkage. Fourth is disulfide linkage. ये देखो, these are the two polypeptide chains. सबसे पहले सपोज इस प्रोटीन के अंदर ये अल्काइल ग्रुप है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो अगली पॉलीपेप्टाइड चेन में भी कुछ ऐसा ग्रुप होगा. बिटवीन दीज टू अल्काइल ग्रुप्स द फोर्स इज वैन डर वाल्स. इस प्रोटीन का C डबल बॉन्ड O और इस तरफ से NH. विच वन? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है, इसका C डबल बॉन्ड हो, इसका NH कैन बी अट्रैक्टेड. देन देयर इज दिस लिंकेज, disulfide linkage. Then you have C double bond ON, O negative. याद है स्वीटर आयन? ये तो मैंने 4 फोर्सेस आपको दिखाई हैं. ऐसा नहीं कि ऐसे ही प्रेजेंट होंगी, बट समवेयर डाउन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये फोर्सेस होंगी. So between the hydrocarbon chain of one amino acid and the hydrophobic chain of the another, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का NH और दूसरे का C डबल बॉन्ड हो, there is a very important sulfide, जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज. एंड एज अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयोन्स, तो इसका कार्बोक्सिलेट और इसका अमोनियम, दिस इज आयोनिक. So this is ionic force, this is disulfide, this is hydrogen bond and this is van der Waals. Clear? करो ये नोट है. यस प्लीज. एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन में ये सारी फोर्सेस होंगी.
एक टाइम पे, यस, बिकॉज अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक एक ही नहीं होगी, देयर विल बी सो मैनी. डन है. देखो लास्ट टर्म फॉर द प्रोटीन्स, नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट लिखना, अ प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अ प्रोटीन found in the biological system with a unique three-dimensional structure, with a unique three-dimensional structure and a specific biological activity, and a specific biological activity is said to be in its native state. And a specific biological activity is said to be in its native state. Right है? Clear or not? अब देखो, जो मेरा हेयर, मेरे हेयर्स हैं या जो मेरी स्किन है, कौन सा प्रोटीन है इसमें? कैराटिन. अब ये यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है. इस टाइम ये प्रोटीन अपनी नेचुरल फॉर्म में है, इसकी एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका, और एक बायोलॉजिकली एक्टिविटी कर रहा है. तो इस टाइम पे जो ये प्रोटीन है, ये इसकी कौन सी स्टेट है? नेटिव स्टेट. जैसे आपका एग है, द रॉ एग, अनबॉइल्ड एग, उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है ट्रांसपेरेंट सा, दैट इज द नेटिव स्टेट ऑफ द प्रोटीन. जो हेयर है इस टाइम मेरा या योर्स, उसका इस टाइम जो स्टेट है, यानी कि एक प्रोटीन की जो नेचुरल स्टेट है, उसको उसका नेटिव स्टेट बोलते हैं. क्लियर हुआ ये? ठीक है. आई रिपीट माई सेल्फ, अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम हैविंग अ यूनिक कॉन्फ़िगरेशन that is either fibrous or globular and carrying out its usual biological activity is said to be in its native state. Now we are coming to a very important word. Write down, denaturation of protein. बहुत बार आता है ये, denaturation of proteins. लिखना, when a protein in its native state, in its native state is subjected to some temperature change or chemical change, is subjected to some, कौन सा चेंज? टेम्परेचर चेंज और केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के आगे लिख लेना ब्रैकेट में, लाइक पीएच चेंज और प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स, ब्रैकेट क्लोजेस. केमिकल चेंज के आगे हमने लिखा पीएच चेंज और प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स, ब्रैकेट क्लोजेस.
the native state of the protein gets destroyed. The native state of the protein gets destroyed. This phenomenon is called as denaturation of proteins. एक प्रोटीन के नेचर को डिस्ट्रॉय करना, राइट? अब एक प्रोटीन का नेचर क्या है? जो उसकी नॉर्मल नेटिव स्टेट है। तो जब आप एक प्रोटीन की नेटिव स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करोगे? या उसको हीट करोगे, या आप उसका पीएच चेंज करोगे, या उसके अंदर कोई केमिकल ऐसा ऐड करोगे जिसकी वजह से उसका नेटिव स्टेट विल गेट डिस्ट्रॉयड। द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज। अब जैसे एग, अनबॉइल्ड एग के अंदर जो प्रोटीन है वो लिक्विड है, बट जैसे आपने उसको बॉइल किया, आपने एग के प्रोटीन को डीनेचर कर दिया। फ्रॉम लिक्विड इट चेंजेस टू सॉलिड एंड व्हाइट। सो उस लिक्विड से सॉलिड व्हाइट जाना इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो लिखो एग्जांपल्स। When an egg is boiled, the globular protein present in it changes to a rubber-like. When an egg is boiled, the globular protein present in it changes into, क्या बोला था? Into a rubber-like insoluble fibrous protein. Clear? When an egg is boiled, उसके अंदर क्या नाम है उस प्रोटीन का? एग के अंदर कौन सा प्रोटीन है? This is the albumin protein present in the raw egg and it is, जैसे आपने इसको टेम्परेचर चेंज दिया, this albumin which is globular will change into fibrous that represents the white. Clear? So on boiling of egg, albumin gets denatured from its natural. So what is the native state of the albumin? Globular. And on changing temperature, it changes into the fibrous, which is the white. Secondly, go curding of milk. Curding of milk is also an example of denaturation of proteins. Clear? नीचे साम मार्क करके लिखना. During denaturation, secondary and tertiary structure of proteins get destroyed. During denaturation, secondary and tertiary structure of the protein gets destroyed, but the primary structure remains intact. On denaturation of proteins, the secondary and tertiary structures are destroyed, but the primary structure remains intact. That is, the sequence of amino acids does not change. अब तो change क्या हुआ ये देखो. From a globular protein it changes to a fibrous. तो folding of the chain change हुई ना. Folding of the chain is all given by the secondary and the tertiary structure. तो जब आपका प्रोटीन डीनेचर होता है तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, बट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हियर एज वेल एज हियर विल रिमेन द सेम. ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. क्लियर? दिस इज अबाउट द प्रोटीन्स. लिखो लास्ट फॉर द सिलेबस, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स कौन बताएगा मुझे बड़ा? न्यूक्लिक एसिड्स. I want what are, I'm not asking how many type of nucleic acids are there.
What are nucleic acids? Which forms the basis of RNA. What are? R. कौन कौन है बायो वाले जो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना, जो इग्नोर कर रहे हैं मेरे को? Simplest definition of nucleic acid, they are polynucleotides. Nucleic acids are polynucleotides. इसका मतलब है ये चीज. In a nucleic acid, the basic repeating unit will be, which will be repeating n number of times and will generate me a. अब बताओ क्या बोला था हमने प्रोटीन्स को? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, बिकॉज उनके अंदर वो पेप्टाइड लिंकेज एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रही थी. आई कैन इन अ वर्ड से कि जो आपके दिस ओलिगोसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स हैं, दे आर पॉलीग्लाइकोसाइड्स. उनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा द्वारा रिपीट करती है. तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर polynucleotides, there is a unit called as nucleotide which repeats again and again. ठीक है? So write down nucleic acids are polynucleotides. They are of two types. Nucleic acids are of two types. कौन कौन से? DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid, and RNA is ribonucleic acid. क्लियर? अब सुनो, जब मैं एक न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? कहां गए वो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? और जब न्यूक्लियोटाइड्स को मैं फर्दर हाइड्रोलाइज करूंगा मुझे 3 यूनिट्स मिलेंगे. यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 यूनिट से मिलके बनता है. ये अब चलो मुझे पता है, तुम्हें पता है. दीज आर द 3 यूनिट्स. ठीक है? एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप है. जब ये तीनों यूनिट मिल जाते हैं तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड. ये अगला न्यूक्लियोटाइड, ये अगला न्यूक्लियोटाइड, ये अगला न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन. व्हाट आई एम फॉर्मिंग? न्यूक्लिक एसिड. तो जब आप एक न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करोगे, देखो ये मान लो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स है. पहले ये ब्रेकअप करेंगे टू गिव मी द न्यूक्लियोटाइड, देन फर्दर दिस न्यूक्लियोटाइड विल ब्रेक अप इनटू the 3 things I'm going to talk about. So write down nucleic acids या न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम. A nucleotide consists of 3 chemical components. बस. A nucleic acid consists of 3 chemical components. First, a pentose sugar. A pentose sugar. Second, a nitrogenous base. A nitrogenous base. Third, phosphate group. Now this is the pentose sugar which we call as the ribose sugar. ये राइबोज शुगर है. और अगर यहां से O हट जाए और यहां पर H आ जाए, इट बिकम्स डीऑक्सी राइबोज शुगर. तो अब फर्क क्या है? जो आपका डीएनए है और आरएनए है उसके अंदर शुगर का फर्क होगा. राइबोज शुगर, ये वाली शुगर प्रेजेंट होगी किसके अंदर? आरएनए के अंदर. और अगर यहां से दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर. क्लियर? स्ट्रक्चर बनाना है कि रहने दूं? बना लो जल्दी से.
दिस इज राइबोज शुगर, ब्रैकेट में प्रेजेंट इन आरएनए। राइबोज शुगर, कोई स्ट्रक्चर को याद मत करना, मैं लिखवा रहा हूं बस, नो नीड टू क्रैम इट। ये तब क्रैम करनी है चीजें जब तुम्हें लगेगा कि केमिस्ट्री में यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। दिस इज विच शुगर? राइबोज, प्रेजेंट इन आरएनए। डन है। और दोबारा से इसको बना लो और यहां पे कर दो H एंड यू कॉल इट एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। क्लियर? सो if a nucleotide chain contains this sugar, which type of the nucleic acid will be generated? DNA। अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेन में ये वाला शुगर आपको नजर आती है तो ये प्रोबेबली आपको न्यूक्लिक एसिड डीएनए बना के देगा। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेन में आपको राइबोज शुगर नजर आ रही है तो दैट विल जनरेट आरएनए। लिखो सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस so adenine, और कौन सा? These three are common in DNA as well as RNA. Thymine only in and uracil only in RNA. So आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसके अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। These three will be both in DNA and RNA. Thymine will only be in DNA, not RNA, and uracil will only be in RNA, not DNA. क्लियर हुआ? ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, a nitrogenous base which is present in DNA but not in RNA. A nitrogenous base which is present in RNA but not in, and what are the nitrogenous bases which are common in DNA as well as? क्लियर? अब लिखो न्यूक्लियोस। अब देखो आपकी जो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो कितनी चीजों से बननी है। अब जब ये चीजें असेंबल होनी भी तो स्टार्ट होनी है, तो पहले कौन कौन असेंबल हुआ? बेस प्लस शुगर, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें ऐड हो गया फॉस्फेट ग्रुप, दैट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। सो राइट डाउन न्यूक्लियोसाइड। लिखना मॉलिक्यूल in which one of the nitrogenous bases is bonded with a sugar molecule. Molecule in which one of the nitrogenous bases is bonded to a sugar molecule is called as.
is called as nucleoside. This is a nucleoside. कोई जरूरत नहीं है आपको HOH वगैरह दिखाने की. अगर आता है क्वेश्चन, यू कैन सिंपली शो इट लाइक दिस. दिस इज बेस प्लस शुगर बोलोगे चलेगा. सो दिस इज बेस प्लस द शुगर. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. नेक्स्ट लिखना न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड बोलो. Yes, sir. ये बन गया न्यूक्लियोटाइड. लिखना व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप is attached to the nucleoside, the compound formed is called as nucleotide. When a phosphate group is attached to a nucleoside, it is called as a nucleotide. ठीक है. क्वेश्चन आता है ये डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. कर लोगे. न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस शुगर. बस ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा चक्करों में पड़ना ही नहीं है. ये सारी चीजें जस्ट बेस प्लस शुगर. दिस इज न्यूक्लियोसाइड विद एन S, एंड बेस प्लस शुगर प्लस Phosphate. gives us, and when this nucleotide repeats, And time. it gives me, Yes, sir. which is either. क्लियर है ये. कर लोगे. बेस प्लस शुगर, आई रिपीट, इज द न्यूक्लियोसाइड. बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज, ये पूरे का पूरा जो यूनिट है ये न्यूक्लियोटाइड है. और जब ये बहुत टाइम रिपीट करेगा आपका बनेगा न्यूक्लिक एसिड. अब बताओ जो न्यूक्लिक एसिड DNA बना या RNA बना, मुझे कैसे पता लगेगा? इसके शुगर को देख के और इसके नाइट्रोजीनियस बेस को देख के. अगर कहीं वहां यूरेसिल नजर आ जाता है तो वो RNA होगा, और अगर कहीं बीच में आपको थायमिन नजर आता है तो DNA होगा. राइट है. लिखो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ DNA. Structure of DNA. Anybody students want to tell? DNA has a, लिखो, it has a double helical structure. DNA has a double helical structure. ठीक है. ये मुझे बताना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A polynucleotide chain. This is another polynucleotide chain. How are these two polynucleotide chains binded to each other? Hydrogen bonded. Where adenine will always be bonded to thymine by a double hydrogen bond, and guanine will always be binded to cytosine by a triple hydrogen bond. ये NCERT का क्वेश्चन है. विच फोर्सेस बाइंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स टुगेदर इन अ DNA मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. और मुझे बताओ, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कौन सी फोर्स बाइंड करती है? सुनो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बेस शुगर फॉस्फेट. बेस शुगर फॉस्फेट. ये लिंकेज इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. कोई नहीं पूछने वाला आपको DNA का स्ट्रक्चर.
डीएनए का स्ट्रक्चर पूछा जाना इज एन एडवांटेज टू अ मेडिकल स्टूडेंट विच शुड नॉट बी गिवन बिकॉज दे आर डूइंग इट ऑल थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, सो आपको बस ये क्वेश्चन आने हैं कि ये क्या है, दिस इज a polynucleotide chain, this is another polynucleotide chain, they are binded to each other by hydrogen bond, but in a polynucleotide chain the nucleotides are binded by phosphodiester linkage। क्लियर? अब मैं वर्ड बोलता हूं, बताना कुछ कॉमन है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज एंड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के यूनिट्स को आपस में जोड़ती है। यस और नो? अब बताओ, these are two sugar units, they are joined by two sugar units, two monosaccharides joined by glycosidic linkage, two amino acid joined by peptide linkage, and two nucleotides joined by, राइट है? और ऐसे बहुत सारे हैं, ये यहां पे सी, यहां पे जी, यहां पे टी, यहां पे ए एंड सो ऑन। सो ए इज ऑलवेज विद द टी एंड जी इज ऑलवेज विद सी। नेक्स्ट लिखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमने ज्यादा डिटेल में नहीं करना, हमने जस्ट वर्ड करना है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बायो वालों को तो बहुत कुछ आता है माइंड में जब वो रेप्लिकेशन वर्ड सुनते हैं ना। कम ऑन बायो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन के बारे में चल हर्षित बोल। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेप्लिकेशन? अपना रेप्लिका तैयार करना, टू मेक अ कॉपी लाइक माई सेल्फ, दैट विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। दिव्यांका बोलना है कुछ रेप्लिकेशन के ऊपर और कुछ? अभी भी नहीं बोला तो कभी नहीं बोला लाइफ में फिर। चलो लिखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रॉपर्टी of a molecule to synthesize another molecule, property of a molecule to synthesize another molecule, ब्रैकेट में रेप्लिका, the property of a molecule to synthesize another molecule is called as, और डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे क्या बोलो अगली लाइन, इट इज अ डैश प्रोसेस, एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। लिखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपकी चेन है। नो दीज टू चेन्स दे स्टार्ट अनफोल्डिंग, पहले तो पूरी फोल्डेड थी, विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे स्टार्ट टू अनफोल्ड एंड ये अब आप देखोगे आपके इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दीज आर द नाइट्रोजीनियस बेसेस। अब जो ये वाली जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग अ न्यू स्ट्रैंड वेयर ए के सामने बनेगा टी, जी के सामने, सी के सामने, टी के सामने, जी के सामने, एंड दिस स्ट्रैंड विल ऑल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू स्ट्रैंड, ए के सामने, सी के सामने, जी के सामने एंड टी के सामने। तो आप देखोगे एक डीएनए ने दो डीएनए के मॉलिक्यूल तैयार कर दिए, राइट? वेयर दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज पेरेंट स्ट्रैंड एंड द न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज डॉटर स्ट्रैंड। तो अब देखो, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, when there is transfer of the
genetic material, one parent strand is going with the daughter strand. अब देखो ये नया DNA बना, और उसमें parent strand तो as it is गया. That's why our features they resemble to our parents, because our DNA gets transferred. So we call that DNA replication is semi-conservative. क्यों? Because half of the parental genetic material is conserved. समझ रहे हो आप? ये देखना, ये यस प्लीज 1 मिनट. ये आपका डीएनए के दो स्ट्रैंड है. आई एम द पेरेंट, दीज आर द टू स्ट्रैंड्स. दे विल स्टार्ट टू अनबाइंड. एक नया स्ट्रैंड बना यहां पर और एक नया स्ट्रैंड बना यहां पर. नो दिस गोज टू द डॉटर, द ऑफस्प्रिंग. दिस गोज, अब उसमें ये पेरेंटल स्ट्रैंड गया, ये नया बना. तो हाफ ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंजर्व्ड. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज DNA replication is semi-conservative. Half of the parental genetic material is conserved. तुम्हारे को ये क्वेश्चन नहीं आना है. तुम्हारे को क्वेश्चन कैसे आएगा? ये ठीक है. You are given a DNA strand. Please make the daughter strand. बन जाएगा. तो अगर आपको क्वेश्चन में ये स्ट्रैंड दिया जाए, यू विल बी एबल टू सिंथेसाइज द डॉटर स्ट्रैंड. क्या बनेगा? टी ए जी. क्लियर है? ये लिखो क्वेश्चन. व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ bases on a DNA strand? What will be the sequence of bases on a DNA strand that would be complementary to the strand given below? That would be complementary to the strand given below. चलो बना लो इसको, जस्ट प्रैक्टिस एक. हो गया. सो अब लिखो लास्ट डिफरेंस. एक तरफ लिखो डीएनए, दूसरी तरफ आरएनए. पहला डिफरेंस, डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, आरएनए इन द साइटोप्लाज्म. टेबल बनाना है. डीएनए लिखना है लेफ्ट में, आरएनए लिखना है राइट में. डीएनए के नीचे लिखना है न्यूक्लियस में मिलता है, आरएनए में साइटोप्लाज्म में मिलता है. साइटोप्लाज्म सबको पता है क्या चीज है? क्या है? मुझे भी सीखने को मिले कुछ. जो मेन कंपोनेंट काउंटिंग में जिसके अंदर सेकंड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड. साइटोप्लाज्म second, DNA double stranded structure, RNA single stranded. Third, sugar is deoxyribose, RNA में sugar is ribose. DNA में जो शुगर है वो deoxyribose है, RNA में ribose है. नेक्स्ट, DNA के नीचे uracil is not present, RNA के नीचे थायमिन is not present. DNA के नीचे uracil is not present,
RNA के नीचे थायमिन इज नॉट प्रेजेंट. DNA के नीचे इट कैन रेप्लीकेट. RNA के नीचे कैन नॉट रेप्लीकेट. DNA के नीचे is responsible for transmission of heredity characters. DNA responsible for transmission of heredity characters. RNA के नीचे बोलो, responsible for protein synthesis. Responsible for protein synthesis. हो गया. अब लिखो लास्ट, vitamins. Vitamins. What are vitamins? Two types to These are compounds which cannot be produced by the body. What must be supplied in small amounts, must be supplied in small amounts to perform specific biological functions. In small amounts for specific biological functions. There are two types. कौन से? Water soluble vitamins, इसका नीचे दिखला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन, हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. एंड फैट सॉल्युबल में ADEK. ADEK. सारा कुछ तुम वैसे खुद भी कर सकते हो, मैं तो जस्ट करवा रहा हूं. जल्दी देखना, विटामिन ए called as retinol. Vitamin A, the chemical name is retinol. लिखना डेफिशिएंसी डिजीज. हाँ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉजेज xerophthalmia, which is called as night blindness. Vitamin A chemically called as retinol and deficiency causes a disease called as xerophthalmia. And sources, अब हमारा यही सीक्वेंस रहेगा सारे के लिए. सोर्सेज लिखना, कॉड लिवर ऑयल COD, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, मिल्क तो सब में लिख दे रहे हैं. सच्ची बात, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सोर्सेज हर किसी के सोर्स में लिख देना अपने आप ही. अब लिखो विटामिन B1, बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं. विटामिन B1, केमिकल नेम थायमिन. टेबल बना लेना चाहिए था ये. थायमिन deficiency causes ये बेरी
या बेरी बेरी, डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी, भूख लगनी कम हो जाती है, वो तो कई और वजह से भी कम हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। तो बस इतना याद रख ले। अब सोर्सेज लिख लो पहले, मिल्क, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स। मतलब विटामिन टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि वी शुड टर्न नॉन वेजिटेरियन। मतलब आई कैन स्पीक ऑफ ऑल द नेम्स बट आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज़ सम वेजिटेरियंस आर सिटिंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो विटामिन B2। विटामिन B2, द केमिकल नेम इज राइबोफ्लेविन। Riboflavin deficiency causes glossitis. Glossitis, that is when the tongue turns dark red. अब देखो कई बार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, you show your mouth and आपकी जो tongue है that has turned red, बोलते गर्मी होगी है, these words are used, that is just the deficiency of these things, glossitis. Sources, milk, eggs, vegetables. Please start using vegetables now. ये जो तुम पिज्जा नूडल्स खाते रहते हो ना, है? Next is vitamin B6. Vitamin B6. Pyridoxine. Pyridoxine. Chemical name. Dermatitis, skin problems. Sources, milk, meat, fish, egg, green vegetables. Dermatitis. The sources are milk, meat, fish, egg, green vegetables. अभी जो मैं एक विटामिन ए के ऊपर स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। अब जो बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, बीच वाले मिस करने के, योर चॉइस। विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। जो मैं जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूं वो तो करने हैं। साइनोकोबालामीन, याद है कौन से चैप्टर में किया था? कोऑर्डिनेशन में। इट कंटेन्स द मेटल कॉल्ड एज कोबाल्ट। साइनोकोबालामीन लिखना। डेफिशिएंसी डिजीज, पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया, pernicious anemia, that is RBC deficiency in the hemoglobin. Then people start turning pale yellow, in your face becomes very pale yellow, so the deficiency is vitamin B12. Sources, meat, egg, fish, curd and green vegetables every time. कौन कौन है यहाँ पर वेजिटेरियन? तुम्हारे को नहीं होगी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज विटामिन सी, इंपॉर्टेंट। विटामिन सी, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। Deficiency causes scurvy, SCURBY, bleeding of the gums. So mouth से related कोई भी problem है, vitamin C is one of the reasons. Bleeding of the gums, that is called as scurvy. And sources, citrus fruits, orange, lemon, amla, citrus fruits.
orange, lemon, amla, tomato, and green vegetables. अब क्वेश्चन आता है व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है एक्सक्रीट हो जाता है बिकॉज सॉल्युबल है। हमारी बॉडी में देखना जो भी डेफिशिएंसीज मेजर होती हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी की होती हैं, बिकॉज ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। अगर डाइट में आए तो दे विल गेट एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द वाटर, वेयर एज अदर्स की डेफिशिएंसी इतना इजीली नहीं होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। जो सबसे कॉमन है वो विटामिन बी एंड सी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी, एर्गो कैल्सोफिरोल। एर्गो कैल्सीफिरोल, दिस इज द नेम, कैल्सीफिरोल। Deficiency, rickets in children, the bending of the bones, RICKET, rickets in children, and osteomalacia in adults. ये EO, ऑस्टियोमलेशिया। जो एल्डरली पीपल होते हैं आप देखोगे उनकी जो लेग्स एटसेट्रा दे गेट बेंट, और चिल्ड्रन भी कई होते हैं जिनकी लेग्स, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सोर्सेज मिल्क, एग, एक्सपोजर टू सनलाइट। So sunlight exposure is very necessary. उससे विटामिन डी जनरेट होता है बॉडी में, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर होता है ये। नेक्स्ट इज विटामिन ई, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल deficiency causes sterility. Deficiency causes sterility and muscular weakness. And sources are essential oils. all oils, essential oils. Sunflower oil या groundnut oil, all oils. सर एक कौन सा मस्कुलर Weakness. ऑल ऑयल And the last one, vitamin K, phylloquinone. Phylloquinone deficiency causes hemophilia. Deficiency causes hemophilia and increased blood clotting time. Hemophilia and second is increased blood clotting time. कई बार आपको कोई छोटी मोटी इंजरी हो एंड आपका जो वो वाला प्लेस है वहां पर जो क्लॉट बनने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, इट मींस यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन के। Sources, cereals and green leafy vegetables. अब एक पूरा जोक करूंगा मैं, बता के कर रहा हूं। There is one more vitamin called as vitamin M. कौन सा? विटामिन मनी। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है वो, उसकी सोर्सेज ATMs। रात को 2 बजे आओ, उठा के ले जाओ। पर उसके लिए आपके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी, मस्कुलर वीकनेस नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू पिक इट अप।
ओके अब देखो मैंने तो सबके नाम बता दिए हैं, पर इंपॉर्टेंट वंस दोबारा से करा रहा हूं। ए को करो, सी डी एंड के, B12 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है, गिव एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी का कोई भी बोल दो, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। B3 मत लिख देना, ठीक है। एंड फैट सॉल्युबल ADEK, ठीक है। सो दैट बाइंड्स अ प्योर, रुक जाना। अब अगली क्लास से हमने करना है, टेल मी हाउ इट गोइंग टू डू इट। पहले तो मुझे स्ट्रेंथ प्रॉपर चाहिए। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं मेरे को? यस सर। अगली क्लास में सारे मुझे यहाँ चाहिए। चैप्टर ऑनलाइन वाले कौन सा चैप्टर बोलते हैं अगली क्लास में? नो सर प्लीज सर केमिकल वी आर स्टार्टिंग विद सॉल्यूशंस। केमिकल काइनेटिक्स को करने वाला चैप्टर है। सॉल्यूशंस पढ़ के आना तो भी आ जाएगा। टेस्ट देख लेना अपना, जो मेन दिया उसमें कुछ नहीं है, रीटेस्ट में एकदम ही आ गया तुझे सारी। रीटेस्ट में इसने वो क्वेश्चन कर दिए जो मुझे नहीं आते थे। मैंने दे दिया चेक करके, हमें नीचे बात जा रही है सर, तो जाना वाला नीचे सभी को पकड़ के लेके जाना। कैसा हुआ? ये पेपर तूने पेन तो लगाया नहीं थी, कितना डरते हो तुम? ऐसे रखना अपने आगे, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर पेन की जरूरत नहीं है। मैं एक बात सुनो ना, सीरियस नोट, प्लीज लिसन टू इट। This revision is your last chance of getting chemistry done properly. अगर तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर को डिवाइड करना है, आई कैन डू इट इन 2 क्लासेस आल्सो, कर दोगे? बहुत इजी है, तुम कर लोगे। नहीं आगे जाके इलेक्ट्रो को मैंने डिवाइड करने दोगे, और सॉल्यूशन में बिकॉज़ टुडे इज सैटरडे, वी हैव संडे मंडे 2 days टू डू इट। सॉल्यूशन को हम एंड गो करेंगे, देन वी विल डिवाइड। तुम अच्छी तरह से करके आना चैप्टर, प्लीज डोंट कम ब्लैक। It's not going to be a class where I will be teaching the stuff like I have been teaching. तुम्हें तभी फायदा होगा इस क्लास का तो तुम पढ़ के आओगे। I repeat the terms: molarity, molality, mole fraction, तीन ही होगी। Then you have the Rod's law and colligative properties. इतना पढ़ के आओ, right? कुछ questions try करेंगे, कोई टॉपिक तुम बोलोगे करना है तो मैं करूँगा। Plan this. इसके अलावा क्या